You're watching India Today with me, Nabila Jamal. Our top focus here, Varanasi court now is all set to deliver its verdict on the Gyanvapi Mosque survey row at 12 p.m. today. On Wednesday, petitioners insisted in court that there is more evidence of a temple that existed where the Gyanvapi Mosque now stands. The court will also be deciding the fate of commissioner overseeing the survey as mega showdown erupts after the mosque panel alleged the commissioner is biased. Earlier, India Today also spoke to the videographer who actually saw what is at the disputed site. Giving exclusive inside details, the videographer revealed that Lord Brahma's lotus flower, gongs and bells can be seen on the back of the mosque wall. In fact, India Today has also accessed exclusive images that show hooded Sheshnag of Lord Vishnu and Lord Shiva's bull, Nandi, and a row of flowers. This comes after slogans and protests outside the mosque complex blocked survey over the weekend. The claim and the counterclaims are on full swing. Mandir side is claiming that idols of Shringar Gauri and other deities still exist, whereas mosque panel now stating that the idols are situated outside the mosque complex. With the ongoing heated slugfest, all eyes now on the Varanasi court. आप बताइए मुझे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये पहली तस्वीर क्या कह रही है? अब देखिए, जहां तक पहली तस्वीर का है, यह हमारा जो इन्होंने उत्तर साइड, दक्षिण साइड और पूरब साइड चूना करना शुरू कर दिए पहले से ही, लेकिन जो पश्चिम साइड का हमारा मूल भाग था अवशेष जो है वो बचा रह गया है। और ये पश्चिम साइड का मूल भाग है। ये दक्षिण साइड में जिसमें दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। अब इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्मद बनाया है और इसमें कोई कहीं वो नहीं है कि हाँ वो है नहीं है। मैं मानता हूँ कि मंदिर तोड़ करके इन्होंने गुम्मद बनाया। ये क्या, इसमें क्या दिखा? अब देखिए, ये साफ है कि ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर का ही ये स्ट्रक्चर है। सारी कलाकृतियां, सारी नक्काशियां और सारे जो है, अभी हम इसके और भी डिटेल आपको दिखाएंगे। और ऊपर गुम्मद बनाया गया है, उसी मलबे से गुम्मद बना है, क्योंकि और कहीं कुछ है नहीं इनके पास। अब वो पूरा डिटेल देखने के लिए इसमें तो घंटा भी दिख रहा है जो वीडियोग्राफर साहब ने बताया है। ये जो पत्थर लगा के बंद किया गया है, ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह है। और ये मस्जिद की दीवार है जिस पर ये घंटा मैं देख पा रहा हूँ। की दीवार नहीं है, ये मंदिर है। इसमें आपको मस्जिद कहाँ से दिख रहा है? आप ये बताइए। ज्ञानवापी जो इस वक्त है, ज्ञानवापी मंदिर है। हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात, ज्ञानवापी तो कह ही नहीं सकते। All right, cutting across to Samar Srivastava, who's joining us live from Varanasi for a little more detail. Samarth, we're looking at the Varanasi court all set to announce the survey date. This comes amid much tension about whether or not a survey must be carried out, because we're seeing some kind of resistance from the mosque committee at Gyanvapi. Give us an understanding on what's expected today. See, we are present at the local court of Varanasi where the order will be pronounced, because it's just a matter of 1 hour when the judge will come and will start the hearing, as the order has been reserved. As we know, yesterday 1.5 hours of hearing, and before that also 1.5 hours, so more than 7 to 8 hours have been invested in this particular case from both sides, be it Hindu or the Muslim side. It started with Advocate Commissioner's role, as Hindu side claimed that he's impartial, while the Muslim side claimed that he's partial and motivated by one particular party, and that is why after Muslim side objected, court reserved the order, while on the other hand Advocate Commissioner clearly said that I have worked impartially, and has also given reply and written to the court. So court will take call on that particular matter. Apart from that, whether Hindu side will be allowed to enter inside the particular mosque or not, this is one of the major points in today's hearing. Also, the survey date could also be announced by the court, like when the survey submission, when the survey will take place, because though the survey date will be decided by the Advocate Commissioner, but the submission of survey date will be decided by the local court, and that may also be decided today, because all hearing work has obviously been completed from both sides, be it from the Advocate Commissioner's end or the entry of
of Hindu side into the mosque, while Muslim side is claiming that Shringar Gauri Sthal and mosque are two different things, and one need not to go inside the particular mosque for that Shringar Gauri Sthal case, while Hindu side claims that the remains of Hindu idols of Shringar Gauri Sthal are inside that particular Tehkhana, which is inside the mosque. So these are the arguments and the counter arguments by the both sides. But one thing on which both of them have agreed is that if Advocate Commissioner is not doing well, then both sides have agreed that judge could also go at the survey site during the survey time. This is what been agreed by both Hindu and the Muslim side, while on the other hand it will be worth seeing whether courts take such decision that the judge will also be present during that particular time when the Advocate Commissioner will take out the survey work, be it including the videography or the survey. So it's going to be worth seeing, but it's just a matter of 1 hour and we can expect some decision coming in this particular Gyanvapi case. All right, India Today did speak exclusively to the videographer who showed us some images that showed very evidently that there are some symbols connected with the Hindu religion very much at the behind of the Gyanvapi Mosque. Right at the back, we saw various religious symbols from the pictures that he showed us. Give us a sense on how significant it is for the community. Samarth, if you can hear us, we know that there are some Hindu religious symbols that have already been established on the walls at the back of Gyanvapi Mosque. At a time like this, when it's evident that there is religious significance for the Hindus, how are the people of the mosque as well as the Hindu community within that area receiving this fact that's now emerged? See, this is something which is in the lanes of Varanasi, because when we spoke to them, they were like, they are ensuring that yes, these symbols exist, but what is the concrete thing? Because Muslim side believes that Gyanvapi existed, while the Hindu side believes that the temple existed, though they might not come out vocally on that particular thing, but what is concrete is that particular part that both communities believe in that mosque and the temple thing. Now it's going to be worth seeing how the entire case goes, but what I can show you the visuals out here from the local court. If my cameraman Sandeep will pan the camera, you can see that the court is full with advocates and workers out here, because it's just a matter of 1 hour when the proceeding will start, though judge has not arrived yet. But once he arrives, the things will take place. We also spoke to Madan Mohan Yadav, the advocate of the Hindu side. He clearly said they are waiting, and he also informed that survey date could not be of tomorrow. If survey date will be announced, it could be of one week after or some. So it's going to be worth seeing what will be the survey date and whether the Advocate Commissioner will be removed or not, because these are two major points. Apart from that, whether the Hindu side would be allowed to enter inside the mosque or not, these are some major points in today's hearing. Yes. All right, Samar, thank you very much. All eyes on the verdict that the Varanasi court would be giving. Possibly a decision on the date of the survey will come out in a little while from now. India Today, the only channel reporting from ground. Varanasi court all set to deliver its order on the next date of videography at the Gyanvapi Mosque premises today. India Today gets these exclusive images that you already seen on your screens here. Images of the videography that was carried out so far show very clearly the presence of Hindu motifs, from Nandi Bull, the ride of Lord Shiva, to Sheshnag carved on that stone behind the mosque. Samarth Srivastava with a report on that. Is this evidence of a temple at the Gyanvapi Mosque premises? Proof on camera, a lotus symbol carved on stone, flowers etched in stone, a huge temple bell carved on stone, an idol of Nandi Bull, the ride of Lord Shiva, a motif of Sheshnag of Lord Vishnu. Images accessed exclusively by India Today. Now hear the man who carried out the videography at the Gyanvapi Mosque premises speaking exclusively to India Today. गणेश शर्मा जो थे वो शिलापट पे जो चीज़ें बनी हुई थी, जो श्रृंखलाएं बनी हुई थी, जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीज़ें कटिंग बनी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ दिख रही थी।
इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है. The petitioners seeking permission for unhindered access to pray at the premises want the basement to be videographed so that more evidence of the alleged destruction of a Hindu temple for the construction of a mosque comes out in public domain. A Varanasi court is expected to deliver its verdict on Thursday on the videography and on whether the court-appointed commissioner is to continue. विपक्षी अधिवक्ता एक ही बात पर रिजिड हैं कि किसी प्रकार से ज्ञानवापी मंदिर कथित मस्जिद के अंदर एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई न होने पाए और हम उस अधूरी कार्रवाई को पूर्ण करना चाहते हैं. The court-appointed commissioner insists he's worked with utmost impartiality. हम केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है. आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं और उनका निस्तारण करना न्यायालय का है. Ahead of the verdict, political temperature is rising in Uttar Pradesh on the issue of the videography. ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीज़ों से छेड़खानी नहीं हो सकती. क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो. कुछ लोग इस समाज में बैठे हों जो खाई पैदा करना चाहते हैं. देखिए, विपक्ष की जहाँ तक आप बात करते हैं, भाजपा विरोध में कभी भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, कभी भगवान भोलेनाथ जी का विरोध करते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विरोध करते हैं. इस प्रकार के विरोध के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की साजिश हो सकती है. All eyes remain on the Varanasi court, which is expected to deliver its order on the next date of videography on Thursday. The petitioners insist evidence will show there is more evidence of temple that existed where the Gyanvapi Mosque now stands. With Samarth Srivastav in Varanasi, Bureau Report, India Today. Taj Mahal, we know, the eternal symbol of love of an emperor for his wife, or a ruler occupying his subjects' property and making an immortal historical architecture in place of an ancient temple. The question, of course, is debated. What is the real origin of Taj Mahal? There are big claims, counterclaims coming up, and a legal battle to unlock the secret chamber that holds the key to all truth. India Today now brings this first exclusive account of the locked-away secret under the ground chambers of Taj Mahal. Let's have a look. The locked door that leads to secret underground chamber of Taj Mahal, where lies the controversial 22 rooms, now in the center of debate about real origin of this wonder Mughal architecture. जहां मैं बैठा हूं इसके ठीक हम कह सकते हैं कि नीचे कमरे हैं, बेसमेंट में कमरे हैं सर, ठीक नीचे बेसमेंट में. यस सर, जहां हम बैठे हुए हैं सर. अच्छा, थोड़ा सा ताजमहल के स्ट्रक्चर को अगर आप समझाना चाहें मुझे, टॉप से लेके नीचे तक, तो थोड़ा समझाइए. देखिए सर, बॉटम से टॉप जो ताजमहल है, मेन बिल्डिंग है सर, इसकी हाइट है 243. अंदर में जो बना हुआ है सर 2 मज़ार है. सर राइट में जो सेंटर पे है वो क्वीन मुमताज़ की है, लेफ्ट में बनी है शाहजहाँ की, लेकिन जो रियल समाधि है वो बंद कर रखी है. तो जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं ताजमहल देखने को, वो देखते हैं अंदर में सर रेप्लिका शाहजहाँ और मुमताज़ की सर. रेप्लिका के बाद नीचे की तरफ नीचे बेसमेंट है सर, रास्ता दिया हुआ है. ऊपर में जब जाएंगे आप, टिकट लेंगे मौजूम का 200 का, तो एक रास्ता है जो बंद कर रखा है सर, वो नीचे सीधे बेसमेंट में जाता है सर, जहाँ मुमताज़ और शाहजहाँ की समाधि बना हुआ है. और उसी बेसमेंट में 22 कमरे हैं या उससे नीचे? उसी के ठीक नीचे जाके डीपली. तो यानी हम कह सकते हैं कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, धरातल में थर्ड फ्लोर पे जो हैं वो 22 कमरे हैं. रास्ते इसी दरवाजे से निकलते हैं और इसी दरवाजों के थ्रू आप जा सकते हैं उन कमरों तक. These locked doors have always been a point of great intrigue. Visitors keep peeping through the jalis for a vain glimpse of the secrets of Taj.
यहाँ पर ताला लगा हुआ है। एएसआई भी इसको नहीं खोल पाता और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वो 22 कमरे नज़र आएंगे लाइन से। अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ तो वो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है वो कमरे नज़र आते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे आप तो इस खिड़की से, इस जाली से आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कुछ आकृति और राइट साइड में आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। इसी दरवाजे से अंदर जाकर उन 22 कमरों के गेट जाते हैं। जो मेन गेट हमने दिखाया वो अंदर जाने का एक रास्ता है जो समझाता है कि आखिर किस तरीके से पिछले 350 साल से ज़्यादा समय से वो कमरे बंद हैं। हालांकि ये बात कही जाती है कि 1930 में ताजमहल की मरम्मत करने के दौरान उन कमरों को खोलने का प्रयास ज़रूर किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा खोलने की कोई स्थिति नहीं बन पाई। और अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर इन 22 कमरों के अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एएसआई अब तक इन कमरों को नहीं खोल पा रहा है। BJP Lok Sabha MP and member of the erstwhile Jaipur royal family, Diya Kumari, claimed that a palace belonging to her forefathers stood on the land where the Taj Mahal was built. डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी। आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। One of the Badshah-nama of Shah Jahan's time mentions the possibility of Taj Mahal being built on the land and in the place of Man Singh Palace. ये आर्किटेक्चर नीचे का कमरों के अंदर का है, यानी कि ये जो मुगल से अलग हिंदू आर्किटेक्चर है वो दिख रहा है। तो ये तो एक बिल्कुल ज्ञात तथ्य है कि जो ताजमहल आज वर्तमान में है ये ऊपर की साइड का ताजमहल और है, नीचे जो है वो आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर और भारत का पारंपरिक आर्किटेक्चर है। 7th May 2022, BJP's media in charge of Ayodhya unit filed a writ petition in the registry of Lucknow bench. This has once again opened an old controversy over the Taj. Built by Mughal Emperor Shah Jahan in the 17th century as a mausoleum for his wife Mumtaz Mahal, the white marble monument has been mired in controversy over whether it was built in place of a Hindu structure as a symbol of emperor's dominance over his subjects, and also opening of the doors of its 22 rooms to see the truth, whatever it is. ताजमहल कोई छोटी जगह नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, यूनेस्को की साइट है। तो इन सब चीज़ों से अगर वहाँ पे कोई विवाद होता है तो भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होती है। तो इसलिए मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली कि अब आप इसमें हस्तक्षेप करिए। जो 20 से ज़्यादा कमरे हैं जो हमेशा से बंद रहे हैं, लास्ट बार 1934 में ये कमरे खोले गए थे, तो उन कमरों का रहस्य क्या है ये जनता के सामने रखा जाए। Another petition was filed in Allahabad High Court on 11th May by Vrindavan Maheshwar Dham, demanding entry for its religious head in his saffron attire to Taj Mahal. The petition refers to Taj Mahal as Tejo Mahale, indicating that there was an ancient Shiva temple where the monument of love stands tall. These big claims and the controversy around Taj Mahal is not new. Once again, the onus lies with the judiciary of India. With Varun Singh in Agra, Bureau Report, India Today. Now, this big monumental face-off only escalates to politics. In the latest, hitting out at the BJP, Congress leader Salman Nizami has called Mughals visionary. Nizami took a jibe at the BJP, saying that Mughals did not build their own statues and instead built monuments like Taj Mahal, Red Fort to attract tourists and generate revenue. Congress leader, in a direct attack, hit out at the BJP over the party's much projected Gujarat model, saying that Mughals had to hide their Gujarat model with a wall. Nizami has slammed the BJP for abusing the Mughals.